my screen? Yes, See, sir. yeah. So one important concept, they say sine inverse theta. They say this one sine for example sine inverse, say for example 1 by 2. Okay, so sine inverse 1 by 2. So here always this theta, this will be always between -1 and 1, correct? Because sine inverse का domain क्या है? Set of all real numbers between -1 and 1, isn't it? Okay, right? Listen, this is an important thing. You have to listen Yes. carefully. So sine inverse theta. Now I'm going to tell you what is cos inverse theta, tan inverse theta, cotangent inverse theta, cosecant inverse theta, sec of sec inverse theta. Okay, this is what I'm going to tell you. And इसके बाद actually दूसरा set of formulas भी है. So अब देखो ये sin inverse 1 by 2. So of course whenever you write this sin inverse 1 by 2, sin inverse का principal value branch set of all real numbers between -1 and 1. So sin inverse 1 by 2. So that means figure में draw करेंगे तो ऐसे होगा. This is your domain, this is your codomain. Okay, domain codomain. So इधर से इधर आपका जा रहे साइन फंक्शन और वट एवर फंक्शन. सो आपका कोडोमेन से वापस इधर होगा साइन इनवर्स एक्स. सो आपको अभी 1/2, सो आपको इधर एक रियल नंबर है 1/2. सो इसका साइन इनवर्स 1/2 चाहिए. साइन इनवर्स 1, सो दिस इज साइन इनवर्स 1/2 मतलब you have to find the angle between किधर, where you have to find the angle sin inverse है तो -π/2 and Minus π/2 के बीच में, pi by pi. π/2 के बीच में आपको इधर -1 to 1 होगा. So you have to find the angle between -π/2 to π/2. So the sine of that angle is 1/2. So which angle is 1/2? 30 degree, right? So क्या मिलेगा? pi/30 degree. π/6. So this will come back to π/6, right? Now again, sine inverse 1/2 π/6. What is sine of π/6? साइन ऑफ π/6 मतलब साइन 30 डिग्री कितना है, वापस कितना आएगा? 1/2 आएगा ना. 1/2. क्लियर? सो Yes, sir. सो व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट इन द ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स आएंगे तो जो व्हाट एवर साइन एग्जांपल बोला साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स है तो भी, टैन इनवर्स है तो भी, कोटांजेंट इनवर्स है तो व्हाट एवर इट इज, इट विल इसका प्री इमेज होगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, राइट? देन उसका साइन और उसका कॉस जो भी लेगा वापस उसी पॉइंट में जाएगा ना. जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6. देन उस π/6 का साइन किधर जाएगा? अगेन 1/2 में जाएगा, करेक्ट? सो ऑलवेज दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज sin inverse sin theta. It is always whatever the theta, it's theta. So somebody asks you what is cos inverse √3/2 without
any thinking, you can write it is root 3 by 2. Understood? 3 by 2. Root 3 by Yes, sir. 2. So cos inverse theta, theta, tan inverse theta, theta, cot tan inverse theta, it is theta. Cosecant inverse theta, जी it sir. is theta. Sec inverse theta, it is theta. Okay. So keep in mind, it is bracket के अंदर sin inverse theta. Now my question is sin inverse sin theta. Okay. This I am giving you Theta. for you to think. A is always theta. And my question, this is my question mark. I'm not saying it is theta, I'm just asking you. Huh? Cos inverse cos theta, tan inverse tan theta. This is very important. Cotangent inverse cotangent theta. Cosecant inverse cosecant theta. Sec inverse sec theta. I'm asking you whether this is also equal to theta or not. Okay. सो अगर थीटा है तो कब होगा, अगर थीटा नहीं है तो कब होगा. सो इसमें से कोई अभी कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इसमें से कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. ओके. साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स आया है तो सो साइन साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स, सो इट इज ऑलवेज साइन साइन इनवर्स न्यूट्रल हो जाएगा थीटा, कॉस कॉस इनवर्स न्यूट्रल हो जाएगा थीटा, tan tan इनवर्स सब थीटा आएगा, उसमें से कोई फर्क नहीं. No need to think anything, like you can directly write the answer. But what about like this, sine inverse sine theta, is it always theta? अगर थीटा अगर ऑलवेज थीटा है तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन. अगर थीटा नहीं है तो कब ये थीटा होगा, कब थीटा नहीं होगा. दिस पार्ट आई एम गिविंग यू टू थिंक. ओके. आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास. So many times I'm telling you to finish the homeworks and all those things. Please finish the homeworks, assignments. Okay. All right. So little bit, but actually the chapter is over, but still I just want to tell you this properties. So that's why I told you this property. But some properties are very important. Especially this property is very important because questions will come for objective type. So pakka questions will come. Okay. So just